Hello everyone. A very good afternoon to all of you. Welcome to Crack Grade B. Please let me know if I'm properly audible and visible. जल्दी जल्दी बताओ मुझे आप लोग मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो Good to go. Okay. Thank you. So we will be continuing with the PYQs जो CSAT exam में पूछे गए थे. We have been doing these questions where assumption के questions हैं, infer के हैं. Then you have to talk about the message passages conveying and other things, right? I think what I have observed कि assumption वाले एक ऐसे questions है जिसमें शायद सबसे ज़्यादा effort लग रहा है learners का and कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे होता है कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस. तो वी विल कीप प्रैक्टिसिंग. प्रैक्टिस से ही आप ये क्वेश्चंस अच्छे करने लगोगे. तो अपने पर्सनल टाइम में भी यू कैन टेक आउट सम टाइम प्रैक्टिस सेट्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड देन उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो. सी दी आंसर एंड थिंक कि ये कैसे आंसर हुआ. बाकी यहाँ पे तो प्रैक्टिस है ही. इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दो फटाफट. साथ ही साथ वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स फॉर CSAT जो 5th of March से शुरू हो रहा है. उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, सो डू चेक इट आउट. ओके, चलो जहाँ से हमने लास्ट छोड़ा था. यस वी ऑलरेडी हैव चीफ. कुछ तो क्वेश्चंस ऑलरेडी करके रखे हैं, आप देखोगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. बट इन द कमिंग डेज भी हम RBI के भी और क्वेश्चंस करने वाले हैं, PYQs. ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन. थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करती हूँ सो दैट मेरे वीडियो की वजह से कुछ हाइड नहीं होगा. एंड लेट्स बिगिन. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू, आंसर बताओ. Okay, I'll read the passage for you. First, the question.
question, not the option, just a question. It says, which one of the following statements best reflects the most logical, rational, crucial message implied by the passage? मतलब कि इससे क्या सीखने को मिलता है, right? What do we get to learn after we read this passage? So let's read it. Let's see how things are. So a global analysis of nitrogen use efficiency. What is this? उसको describe करा है. A measure of the amount of nitrogen that a plant takes in to grow versus what is left behind as pollution. Okay, so this is the efficiency thing. Says that using too much fertilizers will lead to increased pollution of waterways and air. Currently, global average for nitrogen use efficiency is whatever percentage. परसेंटेज की बात है, स्किप करते करते आगे जाएंगे. More than half of the world's population is nourished by food grown with fertilizers, जिसमें नाइट्रोजन होता है, which is needed to produce high crop yields. Plants take nitrogen, they need to grow, and excess is left in the groundwater and air. मतलब environment. Groundwater, air मतलब environment. This results in significant emissions of nitrous oxide. और इससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं वो later on बताया है. So here an enhanced efficiency of use of nitrogen is imperative for food production and environment. What is efficiency? Amount of nitrogen plant takes versus what is left behind as pollution. So ये जो measurement है, अगर ये better हो जाएगा, मतलब अच्छा side of the good use or result of nitrogen is what we want, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि excess में वो काम ही बिगड़ जाए. So yes, यहाँ पर जो आपको आंसर मिल रहा है definitely A है. It is imperative, it is important. Production of synthetic nitrogen fertilizers cannot be stopped. Cannot is an extreme word. Also, synthetic nitrogen की बात बस एक point पर करी थी. Apart from that, the whole thing is about nitrogen use efficiency, not specifically. It is too specific to be the answer. Alternatives to crops that require excess of nitrogen should be identified and cultivated. ये थोड़ा पैसेज के बाहर जा रहा है. Alternatives की हमें नहीं बात करी गई है, ना indication है कुछ. So this is gone. Conventional agriculture using synthetic fertilizers should be replaced with agroforestry and agrosystems etc. तो ये suggestive tone है, ऐसा होना चाहिए, पर ये मैसेज कहीं ऑथर ने नहीं दिया है. यू आर सपोज टू कंक्लूड. मैसेज क्या है? मैसेज कैन नॉट गो आउटसाइड योर पैराग्राफ, राइट? दैट्स व्हाई आंसर आपका ए है. ओके, गुड जॉब. जिनका भी सही हुआ, जिनका भी सही हुआ.
What about rest of you? Only one to answer? Okay, I'll repeat couple of points. Traps, बच के रहना. Okay, what are these traps? Extreme words, half right, half wrong kind of statement. Too broad or too narrow, इस तरीके के statement. Mostly यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है. So you eliminate 3 options and you select one option. ये हमेशा अप्रोच रखोगे तो कॉन्फिडेंटली सही आंसर मार्क कर पाओगे. Yes, my dear students, you are absolutely right. Answer जो है वो है A. Again, we were asked to mention to choose the message conveyed by the passage. मतलब कि इससे हमने क्या सीखा? So let's quickly read it. Along with sustainable lifestyles, climate justice is regarded as a significant principle in environmental parlance. So climate justice important है. Both the principles have bearings on political, economic choices of the nation. So far, climate change summits हैं, compacts हैं. Both the principles have eluded consensus among nations. सब लोग इसको agree करते हैं. Justice in the judicial sense is well defined. However, in the context of climate change के context में it has scientific and other connotation. मतलब उसके और भी मायने हैं. It has more meaning in different domains. The crucial question in the next few years will be how resources etc. are used to support the victims of climate change. So what we are doing about climate change. Justice in climate is not confined to actions and it is confined to something else as well. There are other things as well. तो इन शॉर्ट मैंने समझ लिया कि यहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस के बारे में बात हुई है. We'll start with the B option. Environmental resources are unevenly distributed and exploited across the globe. It is too broad. क्योंकि हम क्लाइमेट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. एनवायरमेंटल रिसोर्सेज को इस तरीके से यहाँ हम नहीं पाते हैं. दैट कैन नॉट बी माई आंसर. देयर इज एन इम्पेंडिंग इशू. इसका of dealing with a huge number of climate change victims and climate refugees. एक impending issue है of dealing with. Impending है means वो चीज़ जो है एक ना एक दिन हमको handle करनी पड़ेगी, वो अभी रुकी हुई है. So depends on the context, sentence में कैसे use हुआ है ना? तो वो अलग अलग sentence के बाकी words के सहारे भी need to figure it out. Climate change in all its connotations is mostly due to developed countries and therefore their share of burden should be more. तो यहाँ message क्या जा रहा है, यहाँ subject क्या है? Subject is कि climate change जो है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज की है. तो ये भी आप एलिमिनेट कर दोगे. क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है, दैट्स द सब्जेक्ट ओवर हियर. एंड रिमेनिंग पार्ट भी हमारे इससे मैच करता है and that's why it was the answer. Okay, so you can also do one thing which is really going to help you कि आपके जो ऑप्शंस होते हैं. ओके, आपने ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस का जो सब्जेक्ट होता है, अभी वो सब्जेक्ट ये ऐसे क्वेश्चन जिसमें मैसेज पूछा है या ये पूछा है कि व्हाट डू यू गेट टू लर्न, इस टाइप से. तो जो सब्जेक्ट है वो पैसेज का थीम अगर है देन बहुत चांसेस है कि वही आपका आंसर है. पैसेज का थीम क्लाइमेट जस्टिस था, ए में वही सब्जेक्ट है. बाकी बी सी डी में सब्जेक्ट ही डिफरेंट है सेंटेंसेस के, मतलब मेन बात किसी और चीज़ के बारे में हो रही है. तो दिस इज समथिंग लाइक अ हिंट यू कैन यूज. अकेला उस पर आंसर नहीं देना डिपेंड होके, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, राइट? चलो, अभी ऑथर क्या कन्वे करना चाह रहा है वो बताओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. लाइक और शेयर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स.
Anyone else? जो बाकी स्टूडेंट्स अगर आप भी कोशिश करोगे, डोंट फील शाय, nobody is going to judge you. Okay? So again, my question here is that what is the message conveyed by the author of the passage? Let's see passage में क्या बात हो रही है. Sourcing food from non-agricultural lands, that means forests, wetlands, pastures, in addition to proper farms, agricultural lands, it enables us the systematic approach to food consumption. Means it's good. अकेला farms पे हम depend नहीं रहे. It allows rural tribal communities to sustain themselves. इससे ये लोगों को मदद हो जाती है. It's also something जो helpful होता है natural disaster season induced shortfalls में. Since the productivity of trees is often more resilient to adverse weather, मतलब weather खराब हुआ तो trees ज़्यादा sustain करते हैं. Forest foods often provide a safety net. So author is ultimately saying कि हमारी dependency only farms, only agricultural lands पर ना हो अगर, and we also keep sourcing from non-agricultural lands, it's gonna help us in sustaining. तो ये बात यहाँ पर हो रही है. Now, yes, the answer is D. Agro ecosystem. Ecosystem means where we are considering forest, wetlands, pastures, farms, agricultural lands should be developed in addition to or along with conventional agriculture. Conventional agriculture क्या हो गया? Agricultural lands, typical farm बना के खेती करना, and remaining forest etc. जो है वो बोल रहा है author कि हमें दोनों को ही develop करना चाहिए side by side. Let's see other options to eliminate them. Food yielding trees should replace other trees. Replacement की बात एक तो extreme option है and बोली भी नहीं गई. Food security cannot be ensured in India with the present practice of. Cannot is a strong word of negation. हो ही नहीं सकता. May not होता तो अलग बात थी. तो ये भी चला गया. Wastelands and degraded areas in India should be converted into agroforestry systems to help the poor. हमारा इशू यहाँ पे जो है पॉवर्टी मिटाना और to do something about those people who are unable to get proper food, उसके बारे में नहीं है. So this is off the topic. This is maybe in the extension to the topic but not जो हमें passage में दिया है. तो बाकी options आराम से आप eliminate कर सकते थे. If you have any doubt, आप मुझसे पूछ सकते हो once I am done with the explanation. So even if I move to the next question, मैं आपको पीछे जाके वो question ज़रूर explain करूँगी, है ना? कुछ doubt रह जाता है अगर तो. चलो अभी next करेंगे हम.
There are like literally 3 sentences in the passage. I'll explain it once answers are given. Okay, Priya answered. Okay, so affluent means sewage, waste, kachra. Okay, so it says, which one of the following best reflects the most logical practical message conveyed by the passage? कोई चीज़ है, क्या सीखने मिलता है? पहली लाइन बड़ी लॉन्ग है. Let's read. While awareness on use or misuse and abuse of antibiotics common knowledge, it is the impact of as is the impact of dosing poultry with antibiotics. तो यहाँ पे अवेयरनेस जो है इट्स अ कॉमन नॉलेज. Environment impact of antibiotic manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed. तो वो अपना वेस्ट जो है प्रॉपरली कैसे डिस्पोज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी बहुत ही कम होता है कि डिस्कस करा जाता है. Pollution from antibiotics factories is fueling the rise of drug resistance infections. तो ये वाला pollution harmful कैसे है वो बताया है. Third line says the occurrence of this bacteria surrounding the pharma plants is well known. Okay. यहाँ पे seriousness of the factories, how it's affecting us, वो बताया गया है. It is necessary to put proper treatment protocols in place. That's what we get to learn because scarcely discuss हो रहे हैं. Because scarcely discuss हो रहे हैं, we get to see all the negative impacts. So yes, answer is A. B says it is necessary to promote environmental awareness. This is a broad answer. हम यहाँ स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स की जो फैक्ट्रीज हैं वो अपना वेस्ट ट्रीट कर रही हैं, नहीं कर रही, कैसे कर रही, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स अ वेरी स्पेसिफिक पैसेज विद अ स्पेसिफिक टॉपिक, तो ये नहीं हो सकता. Spread of drug resistance bacteria cannot be done away with as it is inherent in the medical care. No, the problem is that this bacteria जो कि यहाँ से आ रहा है ड्रग रेजिस्टेंट, उसका रीज़न बताया हमको. प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होना एंटीबायोटिक जो फैक्ट्रीज हैं उनका. फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुड बी सेट अप इन रिमोट एरियाज. कहीं पर कुछ ऑथर ने बोला कि कहाँ सेट होना चाहिए, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, आउटर इनर पार्ट ऑफ द कंट्री. नो, वी नो डोंट सी लोकेशन को लेकर कुछ भी बोला है आउट ऑफ द टॉपिक. दैट्स व्हाई आंसर इज ए. This time, the crux of the passage. Think of it this way. Whole passage, the the idea of the author, the main theme is to be conveyed in one line. तो क्या होगी वो line? Wow. A and C right now we have. For the crux of the passage, ये मत पढ़ो, पहले passage पढ़ लो.
Okay, when you see such a question, of course, better to read the passage first, फिर crux निकाल के check करते इसमें से किस में match हो रहा है ना? The benefits of good quality education accrue only when students complete and leave school after having acquired the gateway skills. The benefits कब होगा? तब होगा. Like one learns to walk before running, similarly one picks up advanced skills only after basic ones. एक explanation दे दिया. Advent of knowledge economy poses new challenges, and one of the severe consequences of having an uneducated workforce will be our inability to keep pace with the global economy. तो यहाँ पे ultimately क्या बोला जा रहा है? Summarize करते जाओ एक एक line को अपने mind में. In this line it says that if we don't have educated workforce, then competing at a global level is going to be difficult. Without a strong learning foundation at primary level, there can be no improvement in the higher education or skill development. So ultimately the message is work right from the beginning. बेसिक फंडामेंटल्स पर काम करेंगे तो ही एडवांस स्किल्स में हम आगे बढ़ पाएंगे. ओके, रफली ये मीनिंग है. Let's now come to the options. To become a global power, India needs to invest in universal quality education. Author is very specific. First of all, बोल रहा है foundational skills पर काम करो. And this is not the agenda जो author ने address करा है. Compete बोला है, but not in this way. A is not your right answer. India is unable to become a global power because it is not focusing promoting knowledge economy. See, this is the negative tone where it seems like there is just one reason because of which we are not a global power, and that reason is we are not focusing. It's too extreme and it's a narrow point. Yes, C is the answer. Our education system should focus more on imparting skills during higher education. तो यहाँ पे जो बोला है कि पहले ही we have to work school level पर, then we can go with the advanced skills. Okay, this is how we get to see कि यहाँ पे C जो है वो सही आंसर है ना. बेनिफिट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन के बारे में फाउंडेशन जब बोल रहा है तो स्कूल एजुकेशन बोल रहा है ऑथर. पेरेंट्स ऑफ मेनी स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पे टॉपिक आपका सब्जेक्ट ही अलग है. पेरेंट्स के बारे में कुछ बात थी तो क्रक्स कैसे होगा, है ना. देयर वाज नथिंग अबाउट पेरेंट्स ओवर हियर इन द पैसेज, सो दैट्स व्हाई डी को यहीं से आप एलिमिनेट कर दोगे. इट डज नॉट से और मीन इन एनी वे टू फोकस. इट सेज, सी रीड द पैसेज, कम ऑन. देखो, you at least understood how we eliminated A, B and C. Now focus on higher education. अगर आप ये term जो है higher education पर अटक गए हो तो it says benefits of good quality school education accrue when this happens. Okay, another place also we get to see this कि similarly आपको यहाँ पे basic foundational skills जो स्कूल में सिखाए जाते हैं इसके respect की बात हो रही है. Then we get to see higher education at the end. Without a strong foundation at primary level, there can be no improvement in higher education and skill development. So यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है. No. See, understand. He says our education system should focus more on imparting skills during higher education. तो ये जो बात है, दिस इज लाइक एक के बाद एक वाली बात. these are not the same points. Understand that. This here at this point author is saying without a strong foundation at primary level, there can be no improvement in the higher. Does that mean कि higher में जाके काम ही नहीं करना है? नहीं ना. The author here in the passage is saying that start work from primary, take it till the higher education. I hope you understand now. So author is saying start your journey here, but don't stop. Take it. There can be no improvement later on. So we have to continue. We have to start from primary level. But the crux of the whole passage is in the C. That focus should be on imparting skills during higher education. And starting of this will happen with the primary level. तो वो पूरा पॉइंट आपको यहाँ पर जो है नहीं मिल रहा, बट अल्टीमेटली बात तो यही हो रही है ना सी वाली. अभी समझ में आया? It's like an extension
that we have to understand. No, it's okay. You can discuss the question. Maybe you can take a screenshot of this and read the passage maybe 2 times, 3 times again class के बाद में, because it's very important for you to have clarity in your mind, है ना? And sometimes when you eliminate other options and you're left with one option, that is your right answer anyway. तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए करना. And I like discussing questions with students. So you're most welcome. So again, the message implied by the passage, most of the time conclusion, क्या में निकल रहा है, what do you get to learn? The paradox of choice is illustrated by the story, who wrote about free will and inability to choose due to numerous choices and uncertainty. तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइस जो है वो कहाँ से देखने को मिलता है? ऑथर एक्सप्लेन दैट इन दिस स्टोरी अ डोंकी स्टैंड्स बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग स्टैक्स ऑफ हे, अनेबल टू डिसाइड कौन सा खाए. इट स्टार्व्स टू डेथ मीन्स inability to choose one, thinking a lot about it. Changes in technology and innovation such as smartphones, tablets only exacerbate our glut of choices. Now author is saying changes जो हुए हैं, it's only increasing हमारा जो यहाँ पे choices को लेकर confusion है. Constant connectivity and overconsumption of real-time data can leave little room for self-reflection and rest, making decisions more difficult. So basically technology को दोष दे रहा है यहाँ पे author. Life is about choices. Many people are overwhelmed with attractive life choices yet find themselves unhappy and anxious. So, everything is about the choice. In our lives, having too few choices may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult, which we get to see. कि इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, ओवर कंजम्पशन वगैरह भी हो रहा है, वी आर ओवरवेल्म्ड, इतनी सारी हैं, अट्रैक्टिव चॉइस के बाद भी अनहैप्पी हैं. So that is the difficulty. कम चॉइस में तो भी दिक्कत, ज़्यादा चॉइस है तो भी प्रॉब्लम. We are influenced by the opinion of others. Nowhere author has mentioned how we react to what other people are choosing for us, for anyone. तो ये out of the topic है. Modern life is full of uncertainties and endless difficult choices.
endless is an extreme word. Uncertainties तो हैं, but just saying this endlessly हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है. So again, no. Modern technology infigures societal structure. इसके बारे में बात हुई है क्या? नहीं हुई है. बहुत ही personal level पर बात हो रही है यहाँ पे. That also very specific to choice, and that's why answer is good job. Okay. Is my audio's volume less? Please let me know. Chalo. Yes, my dear students, absolutely right. The answer is A. Now it's a slightly specific question where it says regarding the financialization of household savings. Okay, regarding this, which of the following statement best reflects the solutions that are implied? तो अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली, यू कैन अंडरस्टैंड उस प्रॉब्लम का रिस्पेक्टिव सोल्यूशन 1 2 3 में से क्या होगा. ओके ओके ओके. नो नो, आई वाज आस्किंग to him only. Yes. A flexible environment is needed to develop solution. Flexibility. Household needs customized solutions. Innovations in FinTech are required. First of all, it's about the household savings. So solutions भी household savings के ही होंगे. तो यहाँ पर innovation को लेकर तो मुझे कोई बात बोलनी नहीं, मेरा आंसर इतने में आ जाता है. Still to be sure that I don't get overconfident in answer, मैं एक बार पढ़ लेती हूँ, है ना. Passage says household finance is unique. It is more about gold and property. Steps to encourage this are critical. Now a populace accustomed to traditional processes will not simply jump into financialization. मतलब टाइम लगेगा. यहाँ से मेन बात है hurdles जो हैं, they include bureaucracy, skepticism, lack of information. तो information और दो, and then providers वगैरह क्या हैं, कितने हैं, and how one can make the transition between them if necessary. So you need to educate, you need to support. So flexible environment is needed to develop solutions. You cannot just stick to the traditional process, conventional process. Second, households need customized solutions. So every household has different needs, and that's why second wala bhi hai. Okay. Okay. This was an easy one and an interesting one because you could relate to it. You can understand it, thinking of your own family or maybe the families you know. So such questions are always a good bet exam में. अगर टॉपिक ऐसा है जिसको आप रिलेट कर सकते हो, आपने खुद या तो फेस करा है और समथिंग,
compared to something वो जो climate justice वाला चीज था, couple of questions ago we did it, so yeah. Assumptions ध्यान से करना. Okay. Assumptions थोड़े broad होते हैं. Things written or the terms used in assumption questions may not be something that you get in the passage. It could be an entirely new kind of a statement. You may think it is not related, but assumption hai wo. Based on this thing, you have to solve the question that, let's say if whatever written here is true, similarly, if you are getting first true, second true, third true, fourth true, that would be your answer, है ना? तो पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं. There are four statements here. So what my passage is saying? Passage says that this pharmaceutical patents grant protection to patentee for the duration of the patent term. Patentees enjoy the liberty. इनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है. To determine the price, which is time limited but could not be unaffordable to public. Such patent protection offered to patentees is believed to benefit public over the long term through these things R&D and all. Although it comes at a cost. अभी टोन बदल गई, अब benefits थे, अब कुछ शायद कुछ negative आ रहा है. Although it comes at a cost in the nature of higher prices for patented medicine. Patent regime and price protection to a legally validated high price for medicine during the currency of the patent. This is the price protection. This thing provide the patentee with a legitimate mechanism to get returns on the costs जो उसके रिसर्च वगैरह में लगी थी. तो यहाँ पे पेटेंट रिजीम एंड प्राइस प्रोटेक्शन क्यों है, कैसा बेनिफिट कर रहा है, क्या कर रहा है पेटेंटी के लिए, वो बताया गया है. तो हियर वी गेट टू सी पेटेंट प्रोटेक्शन given to patentees puts a huge burden on public's purchasing power. महंगी होती है दवाइयाँ. It comes at a cost. यहाँ पर हम देख सकते हैं उसको अपना R&D का, इनोवेशन का, सबका पैसा जो है वो निकालना पड़ता है, हायर प्राइस पर होता है. So this is also true that it is very high in cost, है ना? And that's why first वाला assumption सही है. You have two options eliminated. Dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden. But we are talking about how patents यहाँ पे लेकर एक patentee is charging a lot or he is deciding the price of a medicine, right? तो यहाँ पर अगर ये सच है कि dependence on other countries for pharmaceutical products is a huge burden, then हमारे यहाँ के पेटेंटी भी तो वही कर रहे हैं ना. That is also in a way burden. That's why this is wrong. Okay. Now, providing medicines to the public at affordable prices is a key goal during the public health policy design in many countries. Again,
this is not in truth with what is said here, because यहाँ पर the price point is decided by the patentee, and if medicines जो हैं to the public एक affordable price पर ही की goal है, that means पेटेंट के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, then patentee won't be able to decide. So this is in contrast with what is given in the passage. जो यहाँ की information है ये इसके opposite जा रही है. Okay, and fourth one, yes, we do get it. Answer is B. Governments need to find an appropriate balance between the rights of patentees and requirement of the patients. Please listen to me carefully. अगर आप में से किसी ने आंसर ऐसे मार्क करा कि पेटेंट प्रोटेक्शन यहाँ है, पेटेंटी के बारे में बात यहाँ है, इनमें तो पेटेंट को लेकर बोला ही नहीं है. Sometimes this can work, sometimes assumption के क्वेश्चन में this cannot be your approach. ओके, तो अकेला उस पर वो जो कॉमन वर्ड्स हैं वो देखकर डिसाइड नहीं करना, प्लीज पूरी चीज पढ़ना एंड अजम्पशन के क्वेश्चंस में थोड़ा सा केयरफुल रहना. छोटा सा अजम्पशन का आई थिंक समथिंग जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो assumption के क्वेश्चन से. It says India should ensure the growth of digital economy while keeping our data secure and protected. So economy को grow करना है लेकिन data secure करते हुए. No one will innovate in a place where data is compromised, personal information. So यहाँ पे it's not इतनी कोई important बात है. The ultimate control of data must be with individuals जो generate करते हैं, who should have the control. Data protection laws should enable right kind of innovation जहाँ पे user centric है and privacy भी protect हो रही है. So it's about that how हमारा जो privacy वाला point है of data relates to economy. Based on the above passage, the following assumptions have been made. So if this is true, protection of privacy is not just a right, it has value to the economy. Yes, we can see we have related it. Protection of keeping data secure relates with economy. That relation is mentioned, explained here. So yes, this one is absolutely right. There is a link between privacy and innovation. So yes, later on when we read this, that the protection laws should enable the right kind of innovation. This innovation should be privacy protecting, user centric. So yes, there is a link. ये सब आपस में जुड़े हुए हैं. This is true.
If this is true, second one is also true. So आंसर आपका क्या हो गया? C. अभी आया समझ में? Both of them are true. Both of them we can assume. Since इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है तो प्रोटेक्शन जो है पर्सनल राइट ही नहीं, वैल्यू टू इकोनॉमी भी है. सिंस देयर आर थिंग्स इंटर रिलेटेड हियर, there is a link between privacy and innovation. Okay. This vulnerability is supported by the passage statement that no one will innovate in a survey. You can take it from there also because assumption passage के base पर हुआ है. Assumption के question में you don't get a direct line that supports. It's about the whole passage that supports your assumption, no? That's a good observation. Now this is about which of the following statements reflects as to what the author of the passage intends to say. Here intends to say is similar to what message you are getting, है ना? In India, while the unemployment rate is frequently used measure of poor performance of economy, ये unemployment rate किस चीज़ को बता रहा है? Under conditions of rising school and college enrollment, it paints an inaccurate picture. तो यहाँ पे थोड़ा सा picture clear नहीं भी है at the same time. The reported rate is dominated by the experience of younger Indians who face higher unemployment challenges and उनकी ज़्यादा willingness है to wait for the right job than their older peers. तो यहाँ पे थोड़ा सा issue क्यों हो रहा है वो बताया है. The unemployment challenge is greater for people with secondary or higher education and rising levels inflate बढ़ा देते हैं unemployment challenges. तो जो कम पढ़े लिखे उनके लिए और बढ़ता जाता है challenges. Okay? Yes. So, okay. You means who you? Okay. Definitely answer हमारा यहाँ पे B है. Because unemployment must be seen as a function of rising education and aspirations of young Indians. Because we can see that some people, they have greater willingness to wait. Then there is another problem of rising education levels. So ultimately, unemployment rate जिस तरीके से measure हो रही है, वो अधूरी है in a way, right? Enrollment in schools and colleges is high, but there is no quality education. तो यहाँ पर ये है कि नहीं, इसके बारे में पैसेज नहीं बताता. You will be eliminating this one. Exactly. There are no labor intensive industries.
इंडस्ट्रीज के बारे में बात नहीं करी है, ना ही मैं कंक्लूड कर सकती हूँ. एंड नो इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सट्रीम वर्ड. एलिमिनेट. Education system should be properly designed so as to enable the educated people to be self-employed. Again, the problem is not कि self-employed है कि किसी के यहाँ काम करने जा रहे हैं. The problem here is with respect to how this rate is calculated and measured and how it is related to this rising school and college enrollment, plus why it is not exact, because यहाँ पे लोगों की willingness में भी difference आ रहा है, उनके older peers भी थोड़ा अलग way में काम कर रहे हैं. So these all things ultimately हमें जो बताती हैं वो है B. Okay, so we are done here. We'll be meeting now on Monday, 5th of March. Once again, to remind you, we are starting a new course जो हमारे website पर details आपको मिल जाएंगी, description box में उसकी details आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग वो देखिए ज़रूर. It's gonna help you a lot आपके एग्ज़ाम के लिए. और यहाँ पे तो classes फिर चल ही रही हैं, so keep coming, attending classes on our YouTube channel, but do check out courses on our website as well. Okay? Yes. Chalo, so we are done here. Thank you so much. Make sure to like and share, and we'll be seeing you now on Monday. Bye bye. Take care.